Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss Class 8 Odisha Adarsh Vidyalaya Subject SST Periodic Test 1 some probable question answer Subject SST. First section A History. Question number 1. In which three periods did James Mill divide Indian history? Indian history को जेम्स मिल क्यों तीनटा पीरियड डिवाइड करथिले? Option number A is correct. Hindu, Muslim and British. Question number 2. When did the company government introduce Permanent Settlement Act in India? Correct option number C, 1793. Next question number 3. What were outsiders called in Chotnagpur, Jharkhand? Correct option A, Dikus. Question number 4. In which year did Delhi become the capital of British India? Correct option B, 1911. Question number 5. When was the state of Awadh annexed by the company government? Correct option C, 1856. Question number 6. Who was the first Governor General of India and who was the last Viceroy of India? Answer. Warren Hastings was the first Governor General and Lord Mountbatten was the last Viceroy of India. Question 7. By which name were the traders of East India Company known in India? Answer. The traders of the East India Company were known as the factors in India. Question number 8. Explain the implications of the appointment of the company as the Diwan of Bengal. कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेंगाल रो दिवान भाव में अपॉइंटमेंट कलापर नियुक्ति कलापर तार परिणाम कौन कौन हला सब? आंसर. द मुगल एम्परर appointed the East India Company as the Diwan of Bengal on 12th August 1765. As the Diwan of the region, the company became the chief financial administrator of Bengal. मुगल सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी को 12th August 1765 रे बेंगाल रो दिवान बनाई थिले. आउ दिवान सही अंचल दिवान हेबा परे कंपनी सही अंचल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर हे गला. बंगाल रो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स आर्थिक परिचालना मुख्य कहि परिबा. सेठी जहाँ सब टैक्स कलेक्शन होथला से सब गुडाक मालिक कंपनी हे गला. It was given the responsibility to administer the land under its control and organize its revenue resources. This was to be done with a specific emphasis on yielding enough revenues to meet company's expenses. यह एथिपाई कराउथला कि कंपनी जो आर्थिक जो आवश्यकता गुड़ाक पूर्ण करने से संपूर्ण रेवेन्यू रो मालिक हो जाइथिला बंगाल रो. The company also had to make sure that it could buy the goods that it needed and sell what it wanted. कंपनी मध्य निश्चित होइतला मेक श्योर जे एठी जिनस जहाँ से आवश्यक से गुड़ाक किणी परिबो एवं विक्रय मध्य करि परिबो. क्वेश्चन नंबर 9. Which tribals from central India saw themselves as the people of the forest and found it below their dignity to work as laborers for others? सेंट्रल इंडिया क्यों ट्राइबल जाति निजकू पीपुल ऑफ फॉरेस्ट जंगल लोक बोली निजकू मन करुथिले एवं अन्य मानकर लेबर ही कार्य करबा निजर मर्यादा तल जिनस बा निजर मर्यादा हानि बोली मन करुथिले. आंसर. द बाइग्यास फ्रॉम सेंट्रल इंडिया सॉ देमसेल्व्स एज द पीपुल ऑफ द फॉरेस्ट एंड फाउंड इट बिलो देयर डिग्निटी टू वर्क एज लेबरर्स फॉर अदर्स. Question 10. Explain what are dargahs, khangas and idgahs. Answer. A dargah is the tomb of a Sufi saint. A khanga is a Sufi lodge that may be used as a rest house for travelers and as a place where people come to discuss spiritual matters, get saints' blessings and hear Sufi music. Idgah was an open prayer place for Muslims, primarily built for Eid prayers.
Question 11. Explain the reasons behind the dissatisfaction of the company employees with the company administration. कंपनीर एडमिनिस्ट्रेशन प्रति कंपनीर सिपाही माने जो सिपाही माने उनकर डिससाटिस्फैक्शन कहीं होता रीजन गुड़ाक लेख आंसर Following are the reasons why the Indian employees were dissatisfied with the company administration. Point 1. I. The employees were dissatisfied with their pay, allowances and service conditions. सिपाही माने जो डिसाटिस्फाइड थे तांकर जो सैलरी को लेकिन आउ अलाउंस तांकु जहाँ दि जाइथिला जेमती हाउस घर कहीपर देन सर्विस कंडीशन तांकर चाकरीर अवस्था. Second point, some of the new rules it was felt violated their religious beliefs and norms. Norms कले नीति नियम बिलीफ विश्वास धार्मिक विश्वास एवं नीति नियम को भायोलेट करुथिबा परि सेमाने अनुभव कले. In 1824, Indian sepoys were ordered to travel to Burma by sea and fight for company. 1824 रे इंडियन सिपाही मानकु सैनिक मानकु बर्मा को पठाइबा पई निर्देश दियागला आउ सेमाने समुद्र रे जिवे जहाज रे बसिकी. These sepoys refused as it was considered blasphemous to cross the sea. जदि सी को क्रॉस करा जाए ताहले ईश्वरंक प्रति अनादर बोली सेतेबेले गोटे विश्वास करा जाउथला माने समुद्र क्रॉस करके जे जीवो ताहले तार धर्म चल जीवो बोली गोटे विश्वास थिला. Even though they offered to travel the distance by land route instead, they were severely punished. सेमाने ऑप्शन देले जे आमे समुद्र पार करके न जाई कि आमे लैंड रे जीवु तांकु खूब पनिशमेंट दिया गला सेति पई. Since this issue kept festering for a long time, the company was compelled to pass a law that required sepoys to commit to traveling overseas if necessary. सेथिपाई कंपनी बाध्य होला गोटे नियम बनाया पाई जे जेमती हेले जो जीवे सोल्जर्स माने जेमती ओशन उपरे जाई परिवे. देन थर्ड पॉइंट, मेनी ऑफ द सिपाहीज केम फ्रॉम द peasant families of the Indian heartland. As a result, the anger and discontent of the peasantry was quickly reflected among them and hence led to dissatisfaction with the company administration. सिपाही मानक मध्यरु अधिकांश पिजांट फैमिली जो कृषक परिवार रु आसीथिले इंडिया तेणु इंडिया रे कृषक मानक प्रति करा जाउथबा जो कृषक माने जो क्रोधित होइकि थिले आउ सानकर जो असंतोष मनोभाव थिला जो इंग्रेज मानक प्रति ताहा सहज रे ई सिपाही मानक मध्य असंतोष करथिला रिफ्लेक्ट हेतिला यांकठी एही परि भाव रे सने डिससैटिस्फैक्शन हेतिले कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन प्रति. क्वेश्चन नंबर 12. Explain how the Bengal economy landed up in a crisis under the diwani of the company. बेंगाल इकोनॉमी रो अधोगति माने डाउन हला. क्राइसिस मीन्स घोर संकट को आसिला दीवानी ऑफ द कंपनी रो दीवानी पीरियड रे याको एक्सप्लेन करिबा. आंसर एठारु ए पर्यंत होबो. Under the Diwani of company, artisans began deserting villages since they were forced to sell their goods at abysmally low price. बेंगाल रे जो दीवानी ऑफ कंपनी अंडर रे कंपनी रो दीवानी अंडर रे जो आर्टिसंस माने थिले माने कलाकार माने से माने विलेज त्याग करथिले. डिजर्टिंग मीन्स परित्याग करबा गां छाड़ी की पळौथिले कारण तांको ठारू बाध्यबाधकता रे अधिक परिमाण रे जिनिस गुड़ाक किणुले बहुत अल्प प्राइस रे. आबिस्मली मीन्स बहुत बुरी तरह से लो प्राइस रे तांको किणा होतला तेणु से क्षति सोते तेणु गाँ छाड़ी पड़ौले. इन एडिशन ता सहित द पिजांट्स वे आर अनेबल टू पे द ड्यूज. पिजांट्स कृषक मैंने जो ड्यूज टैक्स दे पे कर पार नथिले दैट वे आर बीइंग डिमांडेड बाय द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्सेस्ड विथ इंक्रीजिंग इट्स ओन इनकम. निजर इनकम एते हेउ नथिला तेणु से आउ कंपनी को दे पार नथिले टैक्स अधिक परिमाण दे जति से मागुथले दे पार नथिले. ग्रेजुअली आर्टिसनाल प्रोडक्शन रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली. धीरे धीरे ये कलाकार मानकर जो प्रोडक्शन उत्पाद कमिबा को लागला आखि दृश्य भाव रे. एंड एग्रीकल्चरल कल्टिवेशन बिगैन टू शो साइंस ऑफ ए कोलैप्स. आहरी मध्य जो एग्रीकल्चरल चाष उत्पादन मध्य
बहुत परिमाण में कमिबाकु लागला। इन द ईयर 1770 बेंगाल सफर्ड ए टेरिबल फेमाइन दैट किल्ड 10 मिलियन पीपल। 1770 रे जो फेमाइन होता से अबाउट 10 मिलियन पीपल मरी जाते एंड वाइप्ड आउट अबाउट 1/3 ऑफ द रीजन्स पॉपुलेशन। एवं वाइप्ड आउट मीन्स टोटाली डिस्ट्रक्शन संपूर्ण ध्वंस प्राप्त होता गोटे से एरियार 1/3 पॉपुलेशन 3 भाग गोटे भाग लोक संख्या संपूर्ण नष्ट हो जाते मरी जाते। दिस फर्दर इंक्रीज्ड द प्रेशर ऑन द बेंगाल इकोनॉमी which was already reeling under the inefficient rule of the company। कंपनी रो यह inefficient rule थिला रो परिणाम थिला। efficient means capable सक्षम, inefficient means अक्षम। एठी सेक्शन ए रो क्वेश्चंस कंप्लीट सरीची। तापरे नेक्स्ट वीडियो रे सेक्शन बी सिविक्स डिस्कस करिवा। इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज डू राइट योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। वंदे उत्कल जननी। Hello everyone, we are discussing Class 8 Odisha Adarsh Vidyalaya CBSE Subject SST Periodic Test 1 Probable Question Answer SST Civics. Question number 1 is, in which year did the Indian National Congress make a demand for a constituent assembly? Correct option is option number D, 1934. Next question number 2. The right to equality bans the practice of which of the following practices? Right to equality एटा क्यों practice को मना करी था? Correct option A, that is untouchability. Next question number 3. The head of state in the parliamentary system of government is called option number A, that is president. Next question 4. The law cannot discriminate between persons based on their religion, caste, gender, all of these above. Option number D is correct. Next, question number 5. When was the Supreme Court of India established? Correct option B, that is 26th January 1950. Next question, what do we mean by term constitution? Constitution means kona? Answer, the constitution is an important document which lays down principles of the country. It is the written law of the land by which the country is governed. It is also regarded as the fundamental law of the country. Question 7. What do we mean by separation of powers? Answer, separation of powers is also known as trias politica. This term was coined by Charles Louis de Secondat, Baron de la Brede et de Montesquieu, an 18th century French social and political philosopher. The term refers to the division of government responsibilities into distinct branches to limit any one branch from exercising the core functions of another. The intent is to prevent the concentration of power and provide for checks and balances. The normal division of branches is into legislature, an executive, and a judiciary. Question number 8. Explain the concept of the rule of law. Answer, the rule of law states that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. The law is equal and similar for all, be it a government official, a wealthy person, or even the president. None of them are above the law. Hence, the law cannot differentiate between people on the basis of their religion, caste, or gender. Nevertheless, any crime or violation of law has to be established, after which a specific punishment is given. Question number 9. State any 5 functions of parliament. Answer, 5 important functions of the parliament are as follows. First, law making. Second, introduction of new laws. Third, financial control over the government's income. Fourth, control over the executive. Fifth, organ of information. Question 10.
Why is it important that government schools do not promote any one religion? कहीं यह गुरुत्वपूर्ण अटे सरकारी स्कूल माने कौन सी निर्दिष्ट एक धर्म को बेसी इंपोर्टेंस देवे नहीं. Answer. It is important that government schools do not promote any one religion because if the government itself does not follow the rules in the constitution, a normal citizen will also not understand the importance of following it. Also, it results in the discrimination between the students belonging to different religious backgrounds. Question 11. Elaborate on the movement for democracy in Nepal. Elaborate means to give more details about. तो ये मूवमेंट विषय टिके अधिक लिखिबो जोटा डेमोक्रेसी इन नेपाल को प्रमोट करथिला. वी कैन से डेमोक्रेसी आसी पारथिला नेपाल रे. आंसर. Nepal is on the northern borders of India. It has witnessed several people's struggle for democracy. डेमोक्रेसी पई बहुत लोक मानकर बलिदान रहा साक्षी अटे. The previous constitution of Nepal, which was adopted in 1990, had the final authority rested with the king. 1990 रे जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करा थिला ताहार हेड चीफ जो मुखिया थिले राजा किंग. Thus people's struggle in 1990 established democracy that lasted for 12 years until 2002. 1990 रे ताहा 12 years पर्यंत लास्टिंग करथिला आउ until 2002 पर्यंत. However, in October 2002, King Gyanendra seated the Maoist uprising in the countryside and started taking over different aspects of the government with the army's assistance. 2002 रे किंग ज्ञानेन्द्र ग्रामांचल रे जो माओइस्ट मानकर अपराइजिंग हेउची बोली दर्शाइकी ताहाकु प्रतिहत करिया पई सरकारंकर विभिन्न सब जो अधीन सरकार अधीन थिबा भिन्न भिन्न जो डिपार्टमेंट गुड़ाक अख्तियार करने को लगिले आर्मीर सहायतार. द किंग देन फाइनाली टू कंट्रोल एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन फेब्रुआरी 2005. तापर 2005 फेब्रुआरी रे निजे सरकार मुखिया हो गले किंग आउ थे. ओके. इन 2006 द पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगन gaining immense force and it repeatedly refused the small concessions that the king made. 2006 रे लोक मानकर आंदोलन आरंभ हो गला पुणी थे डेमोक्रेसी को रिस्टोर करिया पई आउ एहा अधिकरु अधिक बलवत्तर हला लोक मानकर सपोर्ट पाइकी राजा जेते सब प्रतिश्रुति देले सेगुडाक रिपीटेडली ताहाकु मना कले. In April 2006, the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. Finally, in 2007, Nepal adopted an interim constitution. Interim means temporary. शेषरे 2007 रे नेपाल गोटे constitution पाइला interim constitution पाइला. Question 12. Explain the importance of the judiciary in a state. Answer. Following points underline the importance of the judiciary in a state. First, it provides a mechanism for resolving disputes or conflicts between people and state government, between two state governments, and between the center or union and the state governments. Second point, because it is the final interpreter of the constitution, it has the power to declare the law passed by the government as null and void if there is any kind of violation of the principles and ideals of our constitution. यह जेहेतु फाइनाल इंटरप्रिटर अटे कॉन्स्टिट्यूशन रो माने कॉन्स्टिट्यूशन रे जहाँ भी बदलाव आसीबो फाइनाल ये चेक करिवो जुडिशियरी ताहाकु फाइनाल करिवो. नेक्स्ट, इटा यार क्षमता अच्छी डिक्लेयर करने गोटे सरकार जहाँ भी लॉ जदि बन नल आउ भॉइड माने सेटा बंद करदेवार क्षमता जुडिशियरी अच्छी वायोलेसन दर्शाई कॉन्स्टिट्यूशन एगेंस्ट जाऊँगी दर्शाई बंद करदे पारे. नेक्स्ट, इट अपहोल्ड्स एनफोर्सेस एंड प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. People can move the court if any of their fundamental rights are violated. A judiciary क्षमता अच्छी. Uphold means to support a decision.
सपोर्ट करने गोटे डिसीजन को आउ एनफोर्सेस मीन्स ताकू कार्य परिणत करने गोटे लॉ को प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा प्रदान करने फंडामेंटल राइट प्रत्येक लोक मानकर जदि कौन व्यक्ति हृदबोध करिकी तार जो फंडामेंटल राइट मौलिक जो अधिकार अच्छी से क्षुण्ण होता से कोर्ट को जापर। नेक्स्ट वीडियो रे नेक्स्ट ज्योग्राफी सेक्शन डिस्कस करिबा। इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। वंदे उत्कल जननी। हेलो एवरीवन, वी आर डिस्कसिंग क्लास 8 ओडिशा आदर्श विद्यालय CBSE पीरियडिक टेस्ट 1 प्रॉबल क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट SST ज्योग्राफी। Question number 1. Which of the following components is the most essential component for developing resources? এই component मानक मध्यरु केउ component टी resource develop करिया पे important अटे? Correct option is B, human. मनुष्य थिले जाई एगुडा सब resource गुडा को बने ही पारुची। ता माने कोनोसी गोटिए जिनिसर यूटिलिटी सेटा रिसोर्स हो पारिबो कि नहीं दर्शाई थाए। तो जिनस मानक यूटिलिटी ये ह्यूमन बीइंग ही स्थिर करि थाए बा बनाई थाए। तेणु ऑप्शन नंबर बी हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो अर्थ कौन? करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ एबव हबो। ए तीनटा तक हबो। केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स मानक सठिक जो केयरफुली सतर्कतार सहित व्यवहार करिया। तापरे मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट वर्तमान रो आवश्यकता को दृष्टि रखिबा। देन टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन भविष्य पीढ़ी पई आमे जत्न नबा। याकू कहा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. What is the percentage of forest area in India? Correct option is A, 22%. Next question number 4. Which of the following countries has the highest percentage of forest land? Correct option is option C, that is Japan. Next question 5. Which country is the largest producer of bauxite in the world? World रे bauxite production रे largest producer. Option number B, Australia. Next question 6. What is resource? What makes a substance a resource? Resource कौन? ये जो substance मान को resource किए बनाए? Answer. Anything that can be used to satisfy a need is resource. जेकोसी जिनस कौन ना कौन जदि तुम आवश्यकता को पूर्ण कर रिसोर्स बोली कहा जाए। When something can be used, you say it has utility. जदि कौन गोटे जिनस किसी ना किसी व्यवहार आसे ताहार यूटिलिटी अच्छी बोली कहि परिया। यूटिलिटी और यूजाबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। ए यूटिलिटी किंबा यूजाबिलिटी ही गोटे ऑब्जेक्ट को रिसोर्स रे परिणत करथाय। Next question 7. What is a patent? Answer. A patent enables the creator to have an exclusive right over an idea or invention patented by him or her. Question 8. What is the difference between private land and community land? What are community lands also known as? प्राइवेट लैंड एवं कम्युनिटी लैंड मध्य पार्थक्य दर्शाओ। आउ ए कम्युनिटी लैंड को आउ कौन कहा जाए? आंसर. प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स व्हेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। प्राइवेट लैंड टी होची व्यक्तिगत अटे किंतु कम्युनिटी लैंडटा गोटे कम्युनिटी को बिलंग करिथाए जो साधारणतः फडर गोखाद्य अमल करा जाए, फ्रूट्स फल, नट्स कोली, मेडिसिनल हर्ब्स औषध जातीय जो उद्भिद गुड़ाक कलेक्शन करा जाए। कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। ये जो कम्युनिटी लैंड को आहरी मध्य कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बोली कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट आर द रीजन्स फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? विश्वर विभिन्न अंचल लोक मैंने अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है मैंने क्यों अंचल बेसी क्यों अंचल कम एमती कहीं? आंसर. वर्ल्ड हैज वेरिड क्लाइमेट एंड लैंड। विश्व रे भिन्न भिन्न जलवायु एवं भूमि अच्छी। द रॉक्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स
low-lying areas to waterlogging and thick forest areas are normally sparsely populated or uninhabited areas। तो यही सब अंचल गुड़ाक अच्छे जमती रग्ड टोपोलोजी है माने असमतल जो टोपोलोजी मीन्स पृथ्वी पृष्ठ ऊपर भाग को कह जाए आउ स्टीप स्लोप खूब तीक्ष्ण ढालू जो पर्वतर लो लाइंग एरियाज ऑफ वाटर लगिंग जल सन्तसन्तिया जगह नीच जगह थिक फॉरेस्ट एरियाज घंच जंगल एरिया पई ये जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रे कम बेसी होता स्पार्सली पॉपुलेटेड मीन्स अल्प लोक बास करवा आउ अनइनहाबिटेड मीन्स जो अंचल लोक बास करती नहीं ताहले ये एरिया गुड़ाक एत कम कम लोक रही था। क्वेश्चन नंबर 10 नेम द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल इन द वर्ल्ड विश्व में सबुठारु अधिक उत्पादन करुवा कोल कोयला उत्पादन करुवा प्रोड्यूसर्स गुड़ाक किए। आंसर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल इन द वर्ल्ड आर चाइना यूएसए जर्मनी रशिया साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। क्वेश्चन 11 एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड इलाबोरेट ऑन द स्टेटमेंट दैट मीन्स ये एनर्जी को संचय करवा ही एनर्जी जनरेट करवा अटे यही स्टेटमेंट को इलाबोरेट दर्शाओ। आंसर एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। आमे एनर्जी सबु स्थान रे देखा पाऊ किंतु ताहाकू हार्नेसिंग माने अमल करवा एनर्जी को उभय कष्टकर एवं अधिक खर्चर विषय अटे। इफ वी कंटिन्यू एक्सप्लॉइटिंग आवर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस जदि आमे जो नवीकरण हो पारु नथिबा एनर्जी को आमे जदि जो रिसोर्स को आमे जदि खर्च करि चलथिबा ताहले दे विल सून बी एग्जॉस्टेड से गुडाक शीघ्र खर्च हो जाव। द नीड ऑफ द आवर इज टू बेटर यूटिलाइज आवर एक्जिस्टिंग रिसोर्सेस तेणु समयर आवश्यकता होची जहाँ रिसोर्सेस अच्छी एक्जिस्टिंग रिसोर्स माने जोटा वर्तमान अच्छी ताहाकू बेटर यूटिलाइज माने सठिक भाव में व्यवहार करवा। एनर्जी कंजर्वेशन इज द मोस्ट इकोनॉमिकल सॉल्यूशन टू द शॉर्टेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कंजर्वेशन जदि करवा ताहाकू जदि साइतिकी रखिबा अधिक ताहले सेटा ही बेस्ट सॉल्यूशन बोली कहि परिबा। इट रिड्यूसेस एनर्जी consumption and energy demand per capita। Next paragraph we as citizens should minimize the use of energy resources through conservation methods like using of public transport, switching off the lights, fans, televisions, computers when not in use, using energy saving devices, keeping the lights in our homes dust free etc। आमे ये एनर्जी को आमे साइतिकी रखिपर भिन्न भिन्न मेथड रे जेपरिकी आमे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करिपर अल्प खर्च रे टैक्सी किंबा ऑटो रे जाइपर निजर कार किंबा गाड़ी नेबा अपेक्षा कारण से पेट्रोल डीजल खर्च हो तापर स्विच ऑफ करदेबा लाइट फैन गुड़ाक जदि एबे यूज हो नहीं आउ टेलीविजन कंप्यूटर्स एगुड़ाक ऑफ रखिबा जेतेबेले व्यवहार करू नाहंती एमती कि आमे सेव करि परिबा आउ ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। आमे समस्ते जदि ये भलिया उपाय अवलंबन करिया ताहले किछि गोटे परिवर्तन आनि परिबा। दस एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड सेथिपय कहैछि एनर्जी को सेव करबा अर्थ एनर्जी को जनरेट करबा। क्वेश्चन 12 क्लासिफाई द रिसोर्सेस बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट एंड यूज। डेवलपमेंट एवं यूज अनुसार रिसोर्स को क्लासिफाई करो। आंसर Based on their development and use, resources can be classified into two groups, actual resources and potential resources. Actual resources are those resources whose quantity is known। जो actual resources से resource अटे जो गुड़ाकर quantity परिमाण आमको जना अछि। These resources are being used in present। यही resource को वर्तमान आमे व्यवहार करछन्ती। For example, coal deposits in rural region of Germany or the dark soils of the Deccan Plateau in Maharashtra। Next, potential resources are those resources whose entire quantity may not be known and these are not being used at present। जो गुड़ाकर केते परिमाण अच्छी आम जानी नाहंती एवं वर्तमान से गुड़ाक आम यूज करू नाहंती से गुड़ाक पोटेंशियल रिसोर्सेस कहि परिबा। These resources could be used in the future
as the level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources. For example, uranium found in Ladakh. आम पाखरे वर्तमान यथेष्ट टेक्नोलोजी ज्ञान कौशल ना एगुड़ा को व्यवहार करने से एगुड़ाक फ्यूचर व्यवहार करा जाई पारे। आउ एग्जांपल जेपरी ये जो लद्दाख रे यूरानियम गुड़ाक अच्छी ए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गला। नेक्स्ट वीडियो रे ये सब गुड़ाक मर्ज करके गोटे वीडियो रे अपलोड करा हबो। If you are new in our channel, please subscribe our channel and press on bell icon. Also write your comment in comment section. Keep learning, stay connected. Bande Utkal Janani.